1 predominantly, adverb. ज़्यादा कुव्वत से, गालिब तौर पर, ज़बरदस्ती से. Mainly, for the most part. 2 insidious, adjective. पुरकशिश लेकिन नुकसानदेह, तैयार, धोखा देने वाला. Proceeding in a gradual, subtle way, but with very harmful effects. 3 exodus, noun. कोच, रहलत. A mass departure of people. 4 afoot, adjective. पैदल, चलता, पाँव पाँव. In preparation or progress, happening or beginning to happen. 5 traction, noun. खींचने का अमल, के नचाफ, चलाया जाना. The action of drawing or pulling something over a surface, especially a road or track. 6 bigot. हट धर्म / मुतासिब आदमी. A person who strongly and unfairly dislikes other people or ideas. 7 thrive, verb. फरोग पाना, फलना फूलना, पनपना. Of a child, animal, or plant, grow or develop well or vigorously. 8 relic, noun. कदीम चीज, असर, लाश. An object surviving from an earlier time, especially one of historical interest. 9 congregation, noun. इस्तिमा, मजमा. A group of people assembled for religious worship. 10 deliberately, adverb. दानिस्ता तौर पर, जानबूझकर. Consciously and intentionally, on purpose. 11 benign, adjective. बेज़रर, नेक दिल, खैर अंदेश, मासूम. Gentle and kindly. 12 agitation, noun. ज़हनी बेचैनी, ख्यालात का उलझाव. A state of anxiety or nervous excitement. 13 revolt, verb. फिर जाना, बगावत, इन्हिराफ. Take violent action against an established government or ruler, rebel. 14 subtle, adjective. ठीक ठाक, चालाक. Especially of a change or distinction, so delicate or precise as to be difficult to analyze or describe. Propaganda in films is old hat. Jawed Naqvi. Dawn Editorial. Published on December 6, 2022. For more upcoming new videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. Israeli filmmaker Nadav Lapid and all foreign members of the jury at the film festival in Goa have criticized the Kashmir Files in separate interviews. It was a propaganda film in a vulgar trope purporting to empathize with a great tragedy that befell the minority Brahmin community in predominantly Muslim Kashmir. This it sought to achieve by shabbily caricaturing the killers, as they do in Hindi movies, by giving the villain a tick with a fluttering eye and a lust for gore. The vulgarity didn't end there. The movie also became an insidious messenger of hate against Muslims and received the applause and support of the government, Prime Minister downwards. For propaganda, vulgarity, and messaging of hate, no movie should be admitted to a reputed film festival. It was a political decision to push the film's entry, one of the foreign juries said in their interview. The criticism has excited both sides, those who fear or dislike the movie and those who see in its insidious half-truths a truer reality about the exodus of a powerful community that gave India its first and two other prime ministers. Having turned much of the media into its kitchen garden of hate, whipping Indian cinema into line was hardly a surprising objective for the ruling Hindutva establishment. Recent signs came with the violence against those that were found not standing for the national anthem at the start of the movies. In the old days, the playing of the anthem came at the end. Some stayed put and others shuffled out. People didn't have to wear patriotism on their sleeves in a confident nation. The disconcerting fact is that the Kashmir Files was extremely successful with audiences in India and the diaspora abroad. So Lapid's brief point was that the movie was not fit to qualify for a major festival. But that's hardly a reason for the film's opponents to exult. On the contrary, it was good that the movie was screened at an international festival. It allowed the world to get a closer look at the mischief afoot.
The real harm was done elsewhere. The disconcerting fact is that the Kashmir Files was extremely successful with audiences in India and the diaspora abroad. Hate-spewing Indian movies have, however, existed since independence, in a subterranean zone, while the bulk of the cinema shored up Gandhian mores and Nehruvian secularism as the ideal. For example, L.K. Advani was information minister when he retrieved from the archives a 1950s movie that seemed inspired by Golwalkar's anti-Christian vitriol. Swayamsida was shown on Doordarshan when India had just restored democracy after Indira Gandhi had suspended it. A Hindu woman's husband is deaf and mute. Her family priest says the man was ill due to the work of Christian missionaries in the village. The woman leads a violent campaign to throw out the missionaries. As they leave, the husband begins to hear and speak again. Anti-Christian propaganda found insufficient traction and Advani dressed up Emperor Babar as a Muslim bigot. The rest is history. Propaganda on its own is not a problem. Hollywood recently celebrated 60 years of James Bond. Liberal democracies allow citizens to propagate their views, including religion, freely. This freedom excludes hate speech, especially against minority communities. Regardless of the clear statute, overt and covert prejudice continues to thrive, for example, as a relic of white-hooded KKK in the avatar of Donald Trump or as Enoch Powell's rivers of blood threat that has mutated into Rishi Sunak's plans to deport future immigrants to Rwanda. India has adopted Israel's model of open prison for Kashmiris as has been done with Palestine. Propaganda and propagate have a common root though. The word propagate is found crucially in the Indian constitution, which permits free propagation of religion as a fundamental right. In the 17th century, the Pope formed a committee of cardinals in charge of foreign missions of the Catholic Church, called Congregatio de Propaganda Fide, Congregation for the Propagation of the Faith. The modern political sense of propaganda came with World War I. It was not originally intended to deliberately mislead. Its less benign use was honed with World War II. Churchill, Hitler and Stalin used propaganda to rally political support among their masses and with allies. They used the improved radio to good effect. The advent of the cinema brought a handier tool for mass messaging. The word agitprop is of Soviet origin and is short for agitation and propaganda. The Indian People's Theatre Association, popular as IPTA, borrowed the idea and spawned an entire trope of performing arts in practically every Indian language and region. There's nothing wrong with propaganda per se, provided it doesn't harm or target communities. The advantage with cinema is that it can more deftly dress up propaganda as entertainment. Who would have thought that Charlton Heston as Moses in the Ten Commandments was signaling a revolt against Stalin's communist rule by invoking the Egyptian slaves to overthrow the pharaoh? This angle to the deceptively benign movie surfaced in the works of Tanner Merlis, professor of communication and digital media studies at Ontario Tech University. Where Hollywood had been producing frothy films made to distract and entertain, the onset of war meant that it would now get into the business of persuading Americans to support the war effort, says Merlis, who's also written several books about Hollywood's cultural empire, including Hearts and Minds, the U.S. Empire's culture industry. The U.S. Office of War Information had a unit dedicated exclusively to Hollywood, the Bureau of Motion Pictures, Merlis says. Merlis quotes the head of the Office of War Information, Elmer Davis, as saying, "The easiest way to inject a propaganda idea into most people's minds is to let it go through the medium of an entertainment picture when they do not realize they're being propagandized." Among its other follies, the Kashmir Files misses the subtle point about entertainment. The writer is Dawn's correspondent in Delhi. For more upcoming new videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. इसराइली फिल्म साज नादव लापिद और गवा में फिल्म फेस्टिवल में ज्यूरी के तमाम गैर मुल्की अरकान ने अलग अलग इंटरव्यूज में दी कश्मीर फाइल्स को तनकीद का निशाना बनाया।
ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म थी जिसका मकसद मुस्लिम अक्सरियती कश्मीर में अक़लियती ब्राह्मण बरादरी के साथ पेश आने वाले एक अजीम अलमिया से हमदर्दी का इजहार करना था। इसने कातिलों को घटिया अंदाज में कार्टून बनाकर हासिल करने की कोशिश की, जैसा कि वो हिंदी फिल्मों में करते हैं, विलन को फड़फड़ाती हुई आंख और गोर की हवस के साथ टुक देकर। फहाशी यहीं खत्म नहीं हुई। ये फिल्म मुसलमानों के खिलाफ नफरत का एक धोखाबाज पैगंबर भी बन गई और इसे हुकूमत की तरफ से तालियां और हिमायत हासिल हुई, वजीर आजम नीचे की तरफ। प्रोपेगेंडा, फहाशी और नफरत के पैगाम रसानी के लिए किसी भी फिल्म को किसी मरूफ फिल्मी मेले में दाखिल नहीं किया जाना चाहिए। गैर मुल्की जजों में से एक ने अपने इंटरव्यू में कहा कि फिल्म की एंट्री को आगे बढ़ाना एक सियासी फैसला था। इस तनकीद ने दोनों फरीकों को पुरजोश कर दिया है, वो लोग जो फिल्म से डरते हैं या नापसंद करते हैं, और वो लोग जो इसकी निस्फ सच्चाइयों में एक ताकतवर बरादरी के खुरूज के बारे में एक हकीकत देखते हैं जिसने हिंदुस्तान को इसके पहले और 2 दीगर वज़राए आज़म दिए। मीडिया के ज़्यादातर हिस्से को नफरत के बावर्ची खाने के बाग में तब्दील करने के बाद हिंदुस्तानी सिनेमा को लाइन में खड़ा करना हुक्मरान हिंदुत्व एस्टेब्लिशमेंट के लिए शायद ही कोई हैरत अंगेज मकसद था। हालिया निशानियां इन लोगों के खिलाफ तशद्दुद के साथ सामने आए जो फिल्मों के आगाज में कौमी तराने के लिए खड़े नहीं पाए गए थे। पुराने दिनों में तराना बजाना आखिर में आता था। इनमें से कुछ ठहरे रहे और कुछ बाहर चले गए। एक पुरएतमाद कौम में लोगों को अपनी आस्तीन पर हुबल वतानी पहनने की जरूरत नहीं थी। परेशान कुन हकीकत यह है कि हिंदी कश्मीर फाइल्स हिंदुस्तान में सामीन और बैरून मुल्क मुकीम तारिकीन वतन के साथ इंतहाई कामयाब रही। लिहाजा लिपिड का मुख्तसर नुक्ता यह था कि फिल्म किसी बड़े मेले के लिए क्वालिफाई करने के काबिल नहीं थी, लेकिन यह फिल्म के मुखालफिन के लिए खुश होने की शायद ही कोई वजह है। इसके बरक्स ये अच्छी बात थी कि यह फिल्म एक बैन अल-अक़वामी मेले में दिखाई गई। इसने दुनिया को इस शरारत को करीब से देखने की इजाज़त दी। असल नुकसान कहीं और हुआ। परेशान कुन हकीकत यह है कि कश्मीर फाइल्स हिंदुस्तान में सामीन और बैरून मुल्क मुकीम तारिकीन वतन के साथ इंतहाई कामयाब रही। ताहम नफरत फैलाने वाली हिंदुस्तानी फिल्में आज़ादी के बाद से ही ज़ेर ज़मीन इलाके में मौजूद हैं, जबकि सिनेमा का बड़ा हिस्सा गांधीयाई मोरों और नेहरू के सेकुलरिज्म को आइडियल के तौर पर पेश करता है। मिसाल के तौर पर एल के एडवानी वजीर इत्तलात थे जब उन्होंने आर्काइव से 1950 की दहाई की एक फिल्म हासिल की थी जो गोलविलकर की ईसाई मुखालिफ नफरत से मुतासिर थी। दूरदर्शन पर सवीम सदा को इस वक्त दिखाया गया था जब इंदिरा गांधी के मुअत्तल होने के बाद हिंदुस्तान ने जमहूरियत को बहाल किया था। एक हिंदू औरत का शौहर गूंगा बहरा है। उनके खानदानी पादरी का कहना है कि गांव में ईसाई मिशनरियों के काम की वजह से ये शख्स बीमार था। ये औरत मिशनरियों को बाहर निकालने के लिए एक पुरतशद्दुद मुहिम की क़ियादत करती है। जैसे ही वो चली जाती है, शौहर दोबारा सुनना और बोलना शुरू कर देता है। ईसाई मुखालिफ प्रोपेगेंडे को नाकाफी पजीराई मिली और एडवानी ने शहंशाह बाबर को एक मुसलमान मुतासिब के तौर पर तैयार किया। बाकी तारीख है। अपने तौर पर प्रोपेगेंडा कोई मसला नहीं है। हॉलीवुड ने हाल ही में जेम्स बॉन्ड के 60 साल मुकम्मल होने का जश्न मनाया। लिबरल जमहूरियतें शहरियों को मजहब समेत अपने ख्यालात को आज़ादाना तौर पर फैलाने की इजाज़त देती हैं। इस आज़ादी में नफरत अंगेज तकारीर शामिल नहीं हैं, खास तौर पर अक़लियती बरादरियों के खिलाफ। वाज़ेह कानून से कत नज़र ज़ाहिरी और पोशीदा तासुब पनपता रहता है। मिसाल के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के अवतार में सफ़ेद पोश के की बाक़ियात के तौर पर विक पावल के खून के दरियाओं के खतरे के तौर पर जिसने ऋषि संघ के मुस्तकबिल के तारिकीन वतन को रवांडा जलावतन करने के मंसूबों में तब्दील कर दिया है। भारत ने कश्मीरियों के लिए खुली जेल का इसराइल का मॉडल अपनाया है, जैसा कि फ़लस्तीन के साथ किया गया है। हालांकि प्रोपेगेंडा और प्रचार की जुड़ें एक जैसी हैं। लफ्ज़ प्रचार हिंदुस्तानी आईन में अहम तौर पर पाया जाता है, जो मजहब की आज़ादाना तबलीग को बुनियादी हक के तौर पर इजाज़त देता है। 17वीं सदी में पोप ने कैथोलिक चर्च के गैर मुल्की मिशनों के इंचार्ज कार्डिनल्स की एक कमेटी तश्कील दी, जिसे कांग्रेगेटिव डी प्रोपेगेंडा फाइड कहा जाता है, जो अकीदे की तबलीग के लिए जमात है। प्रोपेगेंडे का जदीद सियासी एहसास पहली जंग अजीम के साथ आया। असल में इसका मकसद जानबूझकर गुमराह करना नहीं था।
इसका कम नर्म इस्तेमाल दूसरी जंग अजीम के साथ किया गया था। चर्चिल, हिटलर ती स्टालिन ने अपने अवामती इतिहादियां दे नाल सियासी हिमायत हासिल करने दे लई प्रोपेगेंडे दी इस्तेमाल कीता। उन्होंने अच्छे असर के लिए बेहतर रेडियो का इस्तेमाल किया। सिनेमा की आमद बड़े पैमाने पर पैगाम रसानी के लिए एक हिंडे टूल लेकर आए। लफ्ज़ उगत परवित सोवियत असल का है और वेजिटेशन और प्रोपेगेंडा के लिए मुख्तसर है। इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, जो IPTA के नाम से मशहूर है, ने इस ख्याल को मुस्तार लिया और अमली तौर पर हर हिंदुस्तानी ज़बान और खित्ते में परफॉर्मिंग आर्ट्स का एक पूरा ट्रूप तैयार किया। प्रोपेगेंडे में कुछ भी गलत नहीं है, बशर्ते कि ये बरादरियों को नुकसान ना पहुंचाए या उन्हें निशाना ना बनाए। सिनेमा के साथ फायदा यह है कि यह तफरीह के तौर पर प्रोपेगेंडे को ज्यादा महारत से तैयार कर सकता है। किसने सोचा होगा कि चार्ल्टन हीस्टन 10 अहकामात में मूसा के तौर पर मिस्री गुलामों को फिरौन का तख्ता उलटने के लिए मदऊ करके स्टालिन की कम्युनिस्ट हुक्मरानी के खिलाफ बगावत का इशारा दे रहा था। ओंटारियो टेक यूनिवर्सिटी में मवासलात और डिजिटल मीडिया स्टडीज के प्रोफेसर टेनर मीरलेस के कामों में धोखाधड़ी से नर्म फिल्म का यह जाविया सामने आया। मीरलीस कहते हैं कि जहां हॉलीवुड तवज्जो हटाने और तफरीह के लिए बनाई जाने वाली फिल्में बना रहा था, वहीं जंग के आगाज का मतलब यह था कि अब वो अमरीकियों को जंगी कोशिशों की हिमायत करने पर आमादा करने के कारोबार में शामिल हो जाएगा, जिन्होंने हॉलीवुड की सकाफती सल्तनत के बारे में कई किताबें भी लिखी हैं, जिनमें हार्ट्स एंड माइंड्स दी US एम्पायर कल्चर इंडस्ट्री भी शामिल है। मिरलीज का कहना है कि अमरीकी ऑफिस ऑफ वार इंफॉर्मेशन का एक यूनिट था जो खुसूसी तौर पर हॉलीवुड के लिए वक्फ था, ब्यूरो ऑफ मोशन पिक्चर्स, मिरलीज कहते हैं। मिरलीज ने ऑफिस ऑफ वार इंफॉर्मेशन के सरबराह एल्मर डेविस के हवाले से कहा कि ज्यादातर लोगों के जहनों में प्रोपेगेंडे के ख्याल को इंजेक्शन करने का सबसे आसान तरीका यह है कि इसे तफरीही तस्वीर के जरिए जाने दिया जाए जब उन्हें एहसास न हो कि उनकी तशहीर की जा रही है। इसकी दीगर हमाकतों के अलावा कश्मीर फाइल्स तफरीह के बारे में ठीक नुक्ता नज़र से महरूम है। मजमून निगार दहली मैदान के नामा निगार हैं। For more upcoming new videos, subscribe our channel. Don vocabulary with Urdu meaning. Like, subscribe, share and comments.